So it's a great pleasure to be here in IIT, and it is about my invention called GRAD, Gravitation Resistance and Diet System, that to reverse the end-stage kidney disease. Now, when we say kidney disease, there are many kind of kidney disease. One is the one end stage, in a very simple term, someone who is about to die, right, because of the disease. If they don't get dialysis or if they don't get kidney transplant, so that is called end stage. And when such kind of patient who are already in dialysis, they come to us, then this is what we do with them. This one slide is enough to explain our protocol. We put a patient on 2 hours in hot water, 40 degree. Your skin becomes a kidney if the temperature of this water at 40 degree and this underwater, the pressure on the skin is a little higher than the atmospheric pressure, and these two factors converts the skin into a third kidney. Skin is also known as third kidney, by the way. And head down tilt, when we put the person in this posture, so this means the blood is pulled in opposite direction near the kidney, and it gives the pressure, and the urine output also increases, the swelling reduces, and when the person does it on the same day, swelling and urine output, we can see the difference, and within few days, maybe 1 week, the blood pressure also starts subsiding. This means the classic symptom of chronic kidney disease starts subsiding by this one exercise, that is head down tilt, for about 2 hours. Sometimes they do 1 hour in the morning, sometimes they do and 1 hour in the evening. And finally, the diet, the DIP diet. DIP diet, there is a separate paper presentation. So by Dr. Monica, so she will take care of DIP diet. So when we put the patient on this, we have seen the patient, they don't need dialysis anymore. They don't need the blood pressure medicine anymore. So how we do it? So this is, as you can see, this is called head down tilt. The patient is in head down tilt posture, and this is a scene of our hospital, and they lie down like this for about 2 hours. But if we all are healthy here, we are not chronic kidney disease patient, at least the audience here. Even for the healthy people to be lying down like this for 2 hours may become difficult, although it seems easy. So for some people, even half an hour, and they start feeling some discomfort, uncomfortable, and we say that you lie down only till you feel comfortable in any posture. May not be in supine posture, as you can see here, in whatever posture, as long as the head is towards the lower side. And the hot water immersion, this is a scene of our hospital, and these are the two end-stage kidney disease patient. They were on dialysis before coming to us, but once they started this, they learned it, and then they pursued this in their home, because this to be done for 3 months, at least 3 months. And 3 months, we don't recommend anybody to stay in the hospital. It can be expensive. This right. So they do it at home, and then slowly they taper on the dialysis. So this is what, and this together with the diet, the DIP diet alone also can be helpful for chronic kidney disease patient, as in observation study published by Lincoln University, Malaysia, they found. This is a letter they gave to us. So we keep an eye on the patient through this what we call as branch sheet, right? So this sheet, every day they fill the blood pressure before the head down tilt, blood pressure after the head down tilt, blood pressure after hot water immersion, and weight before and after. Interesting thing, you all can experiment, those who are listening, that if you put inside in the water for about 2 hours, after 2 hours, when you check your weight, expectedly on the first day, the weight should reduce by about 500 grams. 500 grams. This means your 500 gram weight, half a kg weight is lost in the water, right? So for kidney patient, it will be about 1 kg, right? So and you will feel as much tired as if you are returning from a gym, a strenuous exercise. So it seems to be very simply sitting in the hot water. You may be stationary, but inside the body there are a lot of activities happening, which normally happens when you go to the gym. Similar to that, right? So the people, like old age people whom we cannot recommend to go to the gym, but they can easily sit. Especially we have seen the chronic kidney disease patient, they easily can sit. So here I'm sharing the one case study uh, uh, of a chronic kidney disease patient, end stage patient. The patient is from Madhya Pradesh, and she was on dialysis twice a week when she came to us with all the classic symptoms of chronic kidney disease. One of the symptoms is itching also, right?
and were on those medicines, as you can see, creatinine 21, urea 268, and at that time she was undergoing dialysis in the RR hospital, the New Delhi and base hospital, Delhi Camp. So it was 29th of May, and from that day she was admitted in our hospital very near to Mandi, that is the DrBRC at HIIMS hospital, one of our 20 hospitals. So that was on 29th May 2022. After more than 1 year, that is only in the month of July, 23rd of July, she came to our program in New Delhi. And at that time, she was completely free of all kind of symptoms and free of dialysis. And she was back to her routine life. And here in the next slide, I show a small, I think 30-second clipping. Now, what she says after 1 year of following this. आई एम डॉक्टर इंदुप्रीत फ्रॉम हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी और हम लोग यहाँ पर आज डॉक्टर बिस्वरूप के कॉन्फ्रेंस में आए हैं और हम आपको मिलवाते हैं अपने पास्ट किडनी पेशेंट्स हैं। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि वो अभी किडनी पेशेंट हैं, कभी उनको डायग्नोस किया गया था। ये लक्ष्मी जी हैं 26 साल की और पिछले साल अप्रैल में इनका एक मिसकैरेज हुआ, जिसके बाद इन्हें पता लगा कि इनका HB लो है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ था और इनके हाथों और पैरों में स्वेलिंग हुई, जिसके बाद इनके डायग्नोस्टिक्स हुए, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई और इनको एक हॉस्पिटल में जयपुर में एडमिट कर दिया गया। उसके आगे क्या हुआ हम इन्हीं से जानते हैं। मैं लक्ष्मी गुजर MP मंदसौर की रहने वाली हूँ। मेरा 9 अप्रैल 2022 को मिसकैरेज हो गया था, इसी के चलते मेरा ब्लड 4 पॉइंट रह गया था और डॉक्टर ने बताया कि ब्लड चेक किया तो ब्लड यूरिया और क्रेटिनाइन बढ़ के आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि जांच करवाने के बाद कि उदयपुर हॉस्पिटल चले गए हम, वहाँ जाके ट्रीटमेंट करवाया। 6-7 दिन रुके, वहाँ 3 बार डायलिसिस हुई। फिर हम वहाँ से दिल्ली आ गए थे। दिल्ली 1 महीने से ट्रीटमेंट चला, 7 बार डायलिसिस यहाँ पे भी हुए और डॉक्टर ने जब बायोप्सी की तो बोल दिया कि 11% काम कर रही है किडनी। तो उन्होंने ट्रांसप्लांट के बारे में बता दिया था और फिर हमने जैसे ही फ़ोन पे सोशल मीडिया द्वारा पता चला कि हिम्स हॉस्पिटल के बारे में, तो फिर हम वहाँ चले गए। वहाँ जाके हमने जैसे उन्होंने बताया थेरेपी दी, डाइट भी चेंज किया, वहाँ जाके सब कुछ जैसे उन्होंने कहा वैसे किया और आज भी वैसे ही डाइट है। और फिर वहाँ से आके हमने घर पे भी आके वैसे ही डाइट फॉलो की और थेरेपी ले रही हूँ अभी भी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अप्रैल में 22 अप्रैल को मैं फिर जांच करवाई तो बताया कि 76% किडनी काम कर रही है। तो अब कोई डायलिसिस नहीं चल रहा है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहती हूँ हिम्स हॉस्पिटल को कि अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ, अब बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा मेरे को। अच्छा, जब आपको फर्स्ट टाइम पता लगा था कि अब आपके डायलिसिस हुए और आगे भी ज़िंदगी भर ऐसा चलता रहेगा, तो आपको कैसा लगा था तब? उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब जैसे डायलिसिस के लिए कर दिया था उन्होंने कि बोले चलती रहेगी, तो मैं तो उस टाइम तो घबरा गई थी कि पता नहीं क्या होगा आगे चल के, मैं ठीक होंगी या नहीं। और मेरा एक बच्चा भी है 5 साल का, उसके बारे में भी सोचा। और मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं हैं, वो तो फौज मिलिट्री में है, तो मैं वो भी सोच के ऐसे बहुत दिनों तक तो ऐसी रही। और फिर बाद में जैसे हॉस्पिटल के बारे में पता चला, हिम्स के बारे में, तो हम सीधे वहाँ जाके हमको थोड़ा लगा कि यहाँ के तो वो थेरेपी वगैरह जैसे ली, फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि यहाँ से बिल्कुल मैं ठीक हो जाऊँगी। और वैसे उसी को डाइट फॉलो करती रही, अभी भी वही कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ पूरी तरीके से। थैंक यू। ये मोर देन 1 ईयर से, पिछले मई से अगर हम बात करें तो तब से ये अभी तक ये डाइट फॉलो कर रहे हैं और अब बिल्कुल सिम्टम्स इनके नहीं हैं। इनको हाथों पैरों में स्वेलिंग वगैरह हो गई थी इनिशियली, जब ये हमारे पास आए तो काफ़ी परेशान थे और अब इनको कोई सिम्टम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। थेरेपीज़ भी है ऑन एंड ऑफ, कई बार मिस कर देते हैं, डाइट भी कई बार मिस कर देते हैं, बट स्टिल शी इज़ डूइंग वेरी गुड। दैट्स ऑल। So this was 23rd of July 2023, more than 1 year after she came to our hospital, and now you see from 11% kidney functioning, which the doctor told, now the kidney functioning at the time 23rd July, it was 76% kidney functioning. So clear-cut evidence-based reversal, true reversal of chronic kidney disease, end-stage kidney disease, a person from 2 dialysis per week to 0 dialysis, and kidney function also improved, and
After that, we keep on following our patient to see what is happening. Then we again followed up on 28th of September 2023, Shahid Bhagit Singh Jayanti, and this time we followed her through the Zoom meet, and this time. नेक्स्ट स्लाइड चेंज करना है यहाँ पे. ओके, लक्ष्मी गुर्जर, आप प्लीज बोल सकते हैं. आवाज नहीं आ रही है. फोन थोड़ा पास में रखिए, ऊपर कर लीजिए फोन थोड़ा. 9 अप्रैल 2022 को मेरा हो गया चलते में और ब्लड यूरिया बढ़ के जयपुर चले गए थे सर अपने भूपति हॉस्पिटल में, और उसके बाद आर्मी हॉस्पिटल गए, और फिर हमारे को हिम्स के बारे में पता चला अपने रिलेटिव मेरे ब्रदर है उनसे. ठीक है, ठीक है. उसके बाद मैंने अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि क्रेटिनिन जो है 21% था, और ब्लड यूरिया 268 निकला, और ब्लड बहुत कम हो गया था, 4.5 हो गया था. फिर हिम्स आए थे जून 1 जून को. उसी समय से लास्ट वही 31 मई को लास्ट डायलिसिस हुआ है. उसके बाद से कोई डायलिसिस नहीं है, और डाइट फॉलो कर रहे हैं लगभग 60%, और थेरेपी लेते हैं, कोल्ड वाटर लेते हैं पर डे, और गेट डाउन. तो अभी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है बिल्कुल. या ग्रेट. इनके लक्ष्मी गुर्जर हैं जो आप देख रहे हैं, और ये महाराणा भूपति हॉस्पिटल उदयपुर में पहले थे, फिर आरआर आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में शिफ्ट हुए थे हमारे हिम्स डेराबस्सी में आने से पहले. 1.5 साल से डायलिसिस फ्री हैं. पहले 2022 1 मई तक हफ्ते में 3 डायलिसिस चलता था, और 1.5 साल से एक भी डायलिसिस नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल वन. इनका क्रेटिनिन उस वक्त 21.3 था जब डायलिसिस चलता था, आज क्रेटिनिन इनका 4.6 है. ये रिपोर्ट अगर किसी को देखना है तो वो देख सकते हैं. 100% ग्रैड थेरेपी करते हैं. डाइट जो DIP डाइट है वो 60% ही करते हैं. पहले बहुत सारी दवाई चल रही थी, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है. अभी सिर्फ एक BP की दवाई चलती है. पहले जो सिम्टम थे वो स्वेलिंग थे, पैरों में इंडाइजेशन था, वॉमिटिंग था, एंजाइटी था, इचिंग था. आज इनके सिम्टम्स डिस्कम्फर्ट एक भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल. राइट, एज सिंपल एज दैट. तो ये सामने बैठी हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और ये नाम मैं हॉस्पिटल के इसलिए ले रहा हूँ सो दैट इट इज़ वेरीफाइबल. सारे इनके रिकॉर्ड्स हमारे वेबसाइट पे हैं, आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं. लक्ष्मी जी, आप हमसे जुड़ी, लोगों को मोटिवेट किया. ये सारे मीडिया के हैं हमारे मित्र, और मुझे लगता है कि आपकी वजह से, आपकी मदद से बाकी और क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट को लगेगा, उनको एहसास होगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी कि घर पे इंसान ठीक हो सकता है. बाथ टब है आपके पास आसपास? इज इट नाउ नियर बाय? ग्रैड टब एक बार दिखा दें. हाँ, ओके, ग्रेट. तो और हेड डाउन टिल्ट करते हैं, अगर तो करते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं. सर वो आपने जो बताया था वही हमने चारपाई वाला सिस्टम कर रखा है, बट छत के ऊपर कर रखा है. ओके, चारपाई को रोज ऊपर कर लेते हैं. वंडरफुल, वंडरफुल. ये बहुत ही बढ़िया है. आपको देख के और वीडियो में देख के पीपल विल बी मोर मोटिवेटिंग. थैंक यू लक्ष्मी जी, आपके आने के लिए धन्यवाद. So this we keep on following our patient to see what is her progress or what is their progress, and finally before coming here, 31st of October, her status is like this. Her creatinine from 21 reduced to 3.74, and urea near 300 it reduced from 265. But we give importance to the symptom. The symptoms are nil, zero symptoms. There is no symptom whatsoever, and if there is no symptom,
our understanding is the person has recovered substantially, and but still she's following our diet, the DIP diet and the GRAD system, which I explained. So this is about one success story, one case presentation, but there are several hundred patients similar to the story of Lakshmi, and an observation study was done on our first 100 patients of similar nature, and that study was done by Sridhar University in collaboration with Jayanant Ayurvedic College. Jalandhar, Sridhar University is from Pilani, and that was on 100 patients. So that we have published a book on that, and Dr. Anu, the chief investigator from Sridhar University, is right here, and she headed that observation study on 100 patients on who were on dialysis, and when they follow the same system as followed by Lakshmi, what happened to each one of them. So here I close my part, and I hand over the mic to the next speaker, Dr. Anu, and she will present the observation study done by her on 100 patients who were on dialysis at the beginning, and then what happened to them when they followed 100 patients for 100 days. If they do this, what happens? Thank you. Thank you. अगर आप लाइव सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।